Hello everyone, welcome back to our another episode of Beyond the Ranks. So today I have a very special guest with me, Mansi Roy. So Mansi ने अपनी बीटेक फूड टेक में की है और अपनी मास्टर्स की है फूड इंडस्ट्री में. सो जो आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है ना, वो हम फूड टेक इंडस्ट्री के अराउंड हम बात करेंगे. इंडिया में ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है. और अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर होने लगा है कि जो बहुत बहुत फेमस फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो हमें ये अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि यार आप जो भी फास्ट फूड खा रहे हो या फिर जो भी मार्केट से फूड आइटम परचेज कर रहे हो उसकी लेबलिंग चेक करो. इवन अगर आप एक बिस्किट भी परचेज कर रहे हो तो उसके पीछे देखो कि क्या वो पाम ऑयल से बना हुआ है या किससे बना हुआ है. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. और जो फिटनेस इंडस्ट्री के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी सभी को ये अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि यार आप जो भी चीज़ खा रहे हो, जो भी अपनी बॉडी के अंदर दे रहे हो, तो उसे ऐसे भी बिना उसके लेबल्स पढ़े, बिना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जाने उसे परचेज मत करो. तो आज हम फूड इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और अभी इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे जंप आना स्टार्ट हुआ है, लोग इसके बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं. पहले ऐसा होता था कि अच्छा फूड टेक की हो, लोग बहुत सारे मिस थे कि अच्छा खाना बनाता होगा, शेफ होगा, ठीक है, या होम साइंसेस से रिलेटेड करते थे. लेकिन अब इसकी पूरी एक डिपार्टमेंट है, पूरी एक मिनिस्ट्री बनी हुई है. और हमारे मोदी सर भी बहुत ज़्यादा इसे अपलिफ्ट कराना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को, ठीक है. और अभी लास्ट मंथ मैंने भी दिल्ली में प्रगति मैदान में एक इवेंट हुआ था, तो उसमें बहुत अच्छा इवेंट था वो स्टार्टअप से रिलेटेड. तो काफ़ी कुछ इंडिया में अब ग्रो कर रहा है इस डोमेन में. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, वी विल डायरेक्टली जंप इनटू आवर पॉडकास्ट और हम मानसी से जानेंगे उनकी जर्नी, उनकी इनसाइट समझेंगे. सो over to you, Mansi. Could you please start about giving your introduction to our viewers? Yeah, hi Lavin. Thank you for introducing me. And thank you for the introduction about food processing and technology as well, because like you said, food processing or technology has been taken up in the past few years. It has seen the growth. But before that, all we have seen that people talk about food science and technology in a very home science kind of way. कि शायद, or they think that we are like the chefs. But there is a huge difference between food processing and making food. So I'll give a brief introduction about myself. So I'm Manasi Roy. I have done my bachelor's in technology in food technology, and then I did my master's in food safety and quality management. So again, I would say a little about food safety and quality. Why is it important, and what are the different aspects of food safety and quality? So first of all, I would take up safety and quality, and then food security. So these things we have only learned or heard as buzzwords around. So safety, आपने जैसे बोला कि influencers are talking about food safety now because we have seen the boom from green revolution, and after that food processing में boom आया काफी. और हमने यूएस की जितनी strategies थी वो हमने अपनाने की कोशिश की, and we started adding things to our food and making it like increasing its shelf life and also trying to making it edible and more likable by people. So customer acceptance हम try करते गए. तो अब एक मास कंपनी में जब वो आप करते हो तो कॉस्ट रिडक्शन भी करना होता है. उसकी वजह से जितनी भी सारी एडिटिव्स है वो धीरे उसको उसका कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए ये सारी चीजें आई. तो अभी जो चीजें हो रही है, बैलेंस खो चुका है इस पूरे मार्केट में. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू गो बैक टू. कि हम जो अभी कर रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग इज अ कम्प्लीटली बैड थिंग टू डू, this thing we need to change the mindset of people that food processing is not the villain of the whole scenario. Food processing came into picture because I'll give you an example of this. Ki what is the how much time can you buy tomato from the market and keep it in your fridge? You tell me. You must be having groceries, right, in हाँ, your fridge. So आप चार कितने पाँच दिन, दिन 4-5 दिन. 4-5 दिन, एक हफ्ता. अभी हम्म. जो टमाटर आने लगे हैं नए वाले जो आते हैं, और उसमें भी आपने डिफरेंस देखी है कि एक जो नए टमाटर आते हैं और एक जो देसी टमाटर होता है, उन दोनों में भी डिफरेंस है. तो ये सारी बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी है. So all we see is the villainized side of food tech or biotech or genomics or everything. But what food tech actually does, ये जो आप केचप की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 6 महीने से लेकर 6 महीने 8 महीने तक. होती है. So that is the exact thing that food technology or food processing is trying to do, is
increasing the shelf life. So what is shelf life is how much time you can keep it in your shelf without it getting spoiled. So Okay. that is the main purpose of food processing and technology, which is completely like taken in a different direction by, and honestly speaking, what all these influencers do, no offense to them, but influencers take it to a very extreme level. कि अगर कर रहे हैं तो कुछ बुरा ही कर रहे हैं. Not everything is bad. Like if you want to make सपोज आप दूध को यूज करना चाहते हो फॉर मोर नंबर ऑफ डेज, सपोज यू स्टेइंग इन एक्सट्रीमली ह्यूमिड क्लाइमेट लाइक वियतनाम और इंडिया ही पकड़ लो, तो उतना दिन दूध नहीं रहता है. सो आपको उसको ड्राई करना पड़ता है. ड्राइंग इज द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड द मोस्ट अर्लीस्ट डेटेड फॉर्म ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑनेस्टली. ड्राइंग एंड प्रिजर्विंग, drying, preserving, and pickling. These are one of the most age-old forms of food preservation and processing. सो आप बेसिकली अगर एक अचार भी बना रहे हो जिसमें आप नमक ऐड करते हो या चीनी ऐड करते हो या तेल ऐड कर रहे हो उसका आप उसको ज्यादा दिन तक रखने के लिए, that is also food processing, which people need to understand that food processing is not just about कि चीनी ऐसा सफेद कलर का आ रहा है या फिर किसी चीज में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है. ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल डज नॉट कम फ्रॉम एनी फूड मटेरियल. इट इज मेड इन योर बॉडी, लाइक इट कम्स, वैसे प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में. सो इट इज नॉट लाइक कि हमने कुछ कंज्यूम. सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज कंज्यूम थिंग्स माइंडफुली, knowing things कि अभी जितना हम extremes में जा चुके हैं, it is because of our own practices that this has happened. Because we like things which are more colorful, because we like things which are more flavorful, because we are addicted to sugar. Sugar is addictive to your brain. It gives you a dopamine hit and it is addictive to your brain. So that is why more things, obviously marketing फिर उसको उठाएगी. So what we need to do right now as consumers of that, I would say, being both a consumer and producer of this, कि what we can do is we can change our mindsets कि हम लोग ऐसा ही consume करेंगे. We will be more mindful of it. We will have more organic products. We will balance it out. So another example is yogurt. योगर्ट जैसे फर्मेंटेशन से बाकी जितने भी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपने किमची सुना होगा, ये सारी गट के लिए बहुत अच्छी होती है. याकुल्ट भी एक आता है. याकुल्ट आता है. सो ऑल ऑफ दीज आर आल्सो कम अंडर फूड प्रोसेसिंग. So these are good for you. So people don't see the positive side of food processing and they just want to like have a very negative picture. So that I don't know the end goal of this, but that is not how we can change the scenario. We can change the scenario by changing our mindset as a consumer. So so I completed my master's in food safety and quality. Safety again plays a very big role. Like we have started knowing it more कि हमारा गट हेल्थ खराब होता है या फिर पेट खराब होता है, तो उसकी वजह से सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है. हमारा अंदर का माइक्रोबायोटा जो है वो क्यों हमें और चीजें देखनी चाहिए, तो ये सेफ्टी का पार्ट है. सो द नेक्स्ट पार्ट कम्स सिक्योरिटी. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? सो द बिगेस्ट insecurity that we can see in India is actually related to food. Because first I'll give you an example कि food insecurity होता क्या है. Equal distribution of food and just not कि food as in कि मैगी खा लिया या फिर mashed potatoes खा लिया, फिर बस चावल खा लिया तो उनका पेट भरने के लिए खाना. So that does not come under security. Security is something कि quality food which is nutritionally balanced, वो type of food सारे ही जितने भी मतलब all of the people who are living उन सबको पहुंचना चाहिए. So that comes under security of food. So this is what I deal with like in whatever I've learned and everything. So after that, I started working for the Ministry of Food Processing Industries for their PMFME scheme, which is Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises scheme. And I got placed from my college itself, from my university itself. So NIFTIM now is a national accredited university as well. So I think our minister Chirag Paswan has also told कि हर जगह NIFTIM बनाने का. So that's also a thing. So I think food technology is getting its recognition now a little by little. Good. So after that, I got placed during the COVID. So जब COVID हुआ था, when everyone was like having all their problems and obviously we had a lot of losses as well. But that time this whole
scheme was made. So कोविड के अंडर में आत्मनिर्भर भारत अभियान बना था गवर्नमेंट के अंडर, उसी के अंडर पीएमएफएमई स्कीम वाज अ पार्ट ऑफ इट. So, starting from the inception of the scheme, from making the guidelines, from like everything, implementation of the scheme and monitoring and everything, I have seen from the starting as well. So that's one good thing that I got to learn from the ministry. Okay. ग्रेट. सो थैंक यू फॉर द डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स मानसी. यहाँ पर ना मुझे एक और चीज ऐड करनी थी कि अभी जैसे आपने वो एक्सट्रीमिटी वाला पॉइंट बहुत अच्छे से रेज किया. तो अभी क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पर, अगर आप कुछ भी ले रहे हो, लेट्स से अगर हम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक भी कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो जो उसके पीछे फिर वो आपने एन नंबर ऑफ वीडियोस देखे होंगे कि इस कैन में इतने इतने ग्राम्स ऑफ शुगर है, ये ऐसे ऐसे है. तो मतलब ठीक है, आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, लेकिन इससे ना जो जनरल पब्लिक है, लेट्स से हम तो बायो के स्टूडेंट हैं जिसे न्यूट्रिशन का एन भी नहीं पता. ठीक है, Right. अभी हमारी कंट्री इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो हर चीज को लेवल देख के खरीदे. तो उसमें क्या है कि अवेयरनेस स्प्रेड करने के वजह से ना वो एक्सट्रीम में हो जा रहा है, और जो नॉर्मल पब्लिक है, ठीक है, जो उन्हें अपना आइडल मान रही है, तो उससे कंफ्यूजन भी ज्यादा क्रिएट हो रहा है. जैसे एक बहुत ज्यादा पॉपुलर सेइंग है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड. तो Absolutely. इतना ज्यादा कंटेंट आ गया है, वो सैचुरेशन रीच हो गया है कि यार ये चीज लेट से ओट्स है. अब 100 वीडियोस आपको मिल जाएंगी ओट्स के नेगेटिव्स दिखाने के लिए, 100 Hmm. वीडियो मिल जाएंगे आपको ओट्स के फायदे दिखाने के लिए. तो जो नॉर्मल बंदा है ना, जो अपना वेट गेन करना चाहता है, लूज करना चाहता है, वो लिटरली कंफ्यूज्ड है. तो इसमें आपका कोई मतलब अगर कोई भी बंदा हमारी ये वीडियो देख रहा है, तो उसमें एज अ फूड टेक स्पेशलिस्ट आप क्या बताना चाहते हो कि फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमें कितनी ज्यादा कितना ये कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए सोशल मीडिया पर, और क्या रियलिटी है, हमें थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी में जानना है फ्रॉम अ, क्योंकि Right. आप एक एक्सपर्ट हो, आपके पास उसकी डिग्री है. ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के पास फूड की कोई डिग्री नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी आपने अभी बात बताई. तो मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है. Yeah, so if you ask me कि कितना content consume करना चाहिए, honestly, I have also tried to take myself out of this whole content junk that we live in right now, because all the time we are on our phones and we are consuming content like anything. Even after being a nutrition student myself, even after learning nutrition, I have also seen myself consuming content like कि जैसे आपने बताया कि oats में कितना फायदा है या उसमें कितना वो problems है. So honestly, I would say it is a saying that बहुत सारे opinions नहीं लेने चाहिए हमें जब हम कुछ try कर रहे हो नया. So we should obviously go to the internet, but we should try to go in the pathways. We should know what our goals are. And another thing, I would actually want to take this up because I am a little bit inclined towards fitness as well. सो ये जो वेट लॉस का ये जो पूरा वेव आया था ना, सो अभी भी है. सो द फर्स्ट थिंग दैट व्हेन यू गो टू अ जिम और व्हेन यू वेर एवर यू गो, even if you gain like 1 or 2 kgs or something, the first thing you go to a gym, you will listen कि आपको weight loss करना है. So this thing I also want to make people aware of, that weight loss is not the end of everything. Because of the problems of this weight loss, we have seen once upon a time there were size zero models, or we were having like anorexic people, but there were problems like anorexia and all of that. So again, that went to completely extreme of a situation. Okay, so weight loss is not our end goal. First of all, we have to understand that weight loss will not solve all your problems. Weight loss तब हमें ज़्यादा अपने दिमाग में लाना चाहिए when we are obese. When obesity is our problem, तब हमें weight loss को दिमाग में लाना चाहिए कि ठीक है, now I need to lose some kilos over my body, which is problematic, which is not making me able to move or function in day to day life. But a little bit of weight, a little bit of fat, again physiologically saying, like for a male and female body, fat works very differently. So females में there is a higher percentage of fat, and that is required for a female body, for their epithelial tissues to develop and everything, for their day to day functioning, for their hormonal changes and everything. They require that level of fat in their body. ठीक है, बट अगेन जब भी फीमेल्स जिम में जाती है या कहीं भी जाती है, उनको बोला जाता है कि वेट लॉस करो, किसी की शादी हो रही है तो उससे पहले वेट लॉस करो. दिस इज वेरी नेगेटिव, लाइक इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन योर माइंड कि मेरा वेट एक सर्टेन बीएमआई में नहीं है, विच इज ऑल्सो
एज पर आई वुड से ऑल दीज जितने भी स्टडीज होते हैं ना जो भी बीएमआई के, ये हमें पहले वो स्टडीज किस चीज पे बेसिस किया गया है वो हम नहीं देखते। जैसे ये स्टडीज यूएस पे बेस्ड है, तो यूएस की फिजियोलॉजी और इंडिया की फिजियोलॉजी ऑफ पीपल इज अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वहाँ True. पे जो स्टेचर ऑफ पीपल है दैट इज वेरी डिफरेंट, बॉडी डेफिनेशन डिफरेंट होता है, मसल डेफिनेशन डिफरेंट होता है। तो अगर हमें कुछ चीज स्टडी ही करना है, वी हैव टू गो डीप इनटू इट, बट नॉट इन द डीप लाइक साइकिल कि वो एकदम लूप होल में चला गया कि आप कुछ भी खाओ कैंसर हो रहा है। जैसे गूगल में इफ यू सर्च Right. द एडवर्स Right. इफेक्ट्स ऑफ एनीथिंग, द फाइनल थिंग यू गेट कि एनीथिंग यू आर कंज्यूमिंग और हैविंग विल गिव यू कैंसर। ठीक है, विच इज इन अ वे ट्रू, because I'll give you a small thing of food tech and microbiology here कि टॉक्सिसिटी एक चीज होती है। एक कोई भी चीज की, कोई भी चीज दैट यू आर कंज्यूमिंग, देयर इज अ लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये हमें पढ़ाया गया था तो हमें ज्यादा अच्छे से पता है। बट आप पानी भी अगर 1 गैलन से ज्यादा पियो ना पर डे, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिन हो सकती है। So anything that you consume more than required, any vitamins and supplements that you're taking, like creatine or any kind of supplements, or even vitamins, maybe there is differences. Like there is water soluble vitamins and there is fat soluble vitamins. So for example, vitamin D, which is problematic for a lot of people that we see. विटामिन डी डेफिशिएंसी काफी लोगों में होती है, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट प्राइम टाइम्स ऑफ आवर डे हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं विदाउट एनी सनलाइट, सन एक्सपोजर। बचपन में तो खेलते कूदते थे, बट अभी True. वी डोंट गेट टू लाइक गेट एक्सपोज्ड इन द सन दैट मच। सो वी गेट, मुझे ही हुआ था विटामिन डी डेफिशिएंसी। So what we tend to do is we supplement ourselves without consulting anyone, without knowing the background, or by checking into YouTube videos. YouTube video आपको अभी हर चीज में मिल जाएगी, जैसे आपने बताया। आपने यूट्यूब में जाके सर्च किया कि मुझे नींद नहीं आती या फिर मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो आपको 1000 वीडियोस मिल जाएगी। नींद नहीं आती तो मेलाटोनिन ले लो, बट वी डोंट, या मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले लो। अभी इस लेवल पे पहुंच गया है, पीपल थिंक दैट दे नो एवरीथिंग अबाउट True. एवरीथिंग, राइट? But that's not the case. Like if you start taking melatonin, then you will not get the natural REM sleep and all of that. You will not ever reach those things, and everything will be very chemical induced. Again, coming back to vitamin D is a fat soluble thing, so that goes into your fat cells of the body, and which is why you need also fat in your body, because otherwise all these vitamins won't be like functioning in your body, right? So अगर उसका ज्यादा आप कंज्यूम करोगे तो दैट विल कॉज यू टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी, True. उसमें आपको और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। So if people are doing a research, they need to read books and research papers rather than following influencers, I would suggest कि आप 10 influencers को फॉलो करोगे, वो उनकी इतनी सी जो उन्होंने सीखा है या फिर हाफ विट नॉलेज जिसको कहते हैं, Hmm. उसी के बेसिस पे आपको बताएंगे कि, या फिर उनकी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस पे आपको बताएंगे। उनकी बॉडी वेट, उनका हाइट, उनका कुछ भी हो, उनका फैट रेशियो जो भी है उसके हिसाब से बताएंगे। बट व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज योर बॉडी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स बॉडी। Probably you'll find 1 in a million influencer which is who is completely equivalent to you, but anyway we all know that genetically every person is very different. Okay, so that we need to take care of कि we cannot compare our bodies or our systems with them, because हमारा day to day activities अलग होता है, हमारा खाने के तरीका अलग होता है। आप किसी यूएस के इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो और आप उसकी another thing, a 9 to 5 worker is trying to follow an influencer's routine, that will never work out. We need to understand that कि उसका पूरा दिन का काम ही ये है कि वो वर्कआउट करे, वो अच्छे से खाना खाए और फिर वो रेस्ट करे अच्छे से। दैट इज देयर होल डेज वर्क, दैट्स व्हाट makes them earn money. But what makes you earn money is your 9 to 5 job, sitting for like 8 hours, 8 9 hours to 10 hours sitting at a desk. So True. your whole day is very different from their day. So you can never, first of all, you need to stop comparing yourself with them. And you need to start understanding कि आपका दिन कैसे है, आप क्या क्या खा सकते हो। घर पे ही ऑलरेडी अवेलेबल क्या क्या चीज़ें हैं आपको, जैसे कि रोटी बन रहा है, तो रोटी में क्या डिफरेंस ला सकते हो आप? मल्टीग्रेन आटा ऐड कर सकते हो उसमें, आप सब्जियां ज़्यादा खा सकते हो,
So one thing that I really like doing with my like day-to-day things is balancing everything. Again, I do not like diets. ये जो diet का concept है, I do not get it. The only diet I can follow probably is a balanced diet, which we need to understand कि everybody के needs अलग होते हैं. बट वन थिंग दैट यू कैन फॉलो इज कि आपके खाने में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स भी रहे, फैट्स भी रहे, वाइटामिन भी मिले. और वाइटामिन आपको सप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सब्जियां खाओ, फल खाओ जो बनती है, और बाकी चीजें योगर्ट खाओ विच इज वेरी गुड फॉर योर like gut health, and all of those fermented vegetables. Like अभी तो हमने, because we have started collaborating and we have started understanding the whole world और सारी cultures, so we know kimchi, sauerkraut, ऐसी चीजें जो fermented होती है, and that is better for your health. So yeah, I think that answers your influencer wala thing, Yeah, because I think there is something that I have for influencers, cool. because they go to such extremes and they try to make them compare with them, but you should never do that. I would suggest that to all of you. ये काफी अच्छा वैल्यू ऐड किया मानसी ने हमारे व्यूअर्स के लिए कि यार आपको ना मतलब हर चीज मतलब आंख बंद करके फॉलो करने की जरूरत नहीं है. आपकी बॉडी की नीड्स अलग है, उनकी बॉडी की नीड्स अलग है, और भाई वो कंटेंट क्रिएट करके जिम में जाके 3 से 4 घंटे वर्कआउट करके वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उन्हें फॉलो करो, आइडल मानो, लेकिन बिल्कुल आंख बंद करके अंधा विश्वास मत करो. और आपका जो पेट पलेगा ना वो आपकी 9 से 10 घंटे की जॉब करके पलेगा. तो ठीक है, उसमें ध्यान लगाओ और बैलेंस बनाने का कोशिश करो. लाइक टू मच ऑफ एनीथिंग इज कुड बी डेंजरस, सो वी शुड स्टिक टू दिस नोशन. सो मानसी, मूविंग ऑन टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. सो यहाँ पर मुझे जानना था कि यार जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने लेट से 12th में बायो लिया, ठीक है. अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि फूड टेक बिना फूड टेक अगर हमें बीटेक बायोटेक में बीटेक फूड में करनी है, तो Hmm. क्या 12th में बायोलॉजी होना मस्ट है, या फिर बिना जो मैथ्स बैकग्राउंड का है वो भी फूड में अपनी ग्रेजुएशन कर सकता है? Okay, so I'll tell you something about me, which is probably funny to some people. मेरा 12th का जो combination था of subjects was biology, physics, chemistry, and mathematics, ओके. and English, Hindi, and I think physical education was one other subject along with that. So I had both biology and math because I wanted to keep my options open कि अगर मुझे जेई देने का मन किया या फिर इंजीनियरिंग के दूसरे लाइंस में जाने का मन किया, so those things are there for me. So NEET भी मुझे देने का मन था, but I did not sit for NEET. And I would actually say why I came into the food technology. So it goes back to my childhood actually. So I would start from there. So since childhood only, I had a lot of interest in food. And not just कि खाना बनाना obviously मुझे interest था ही, अभी भी it is one of the like my favorite activities. It really gives me a lot of pleasure and a lot of calmness in a day if I cook food. But not just that, to understand where my food comes from, what am I eating, what is there on my plate, and I really like food myself. I really like to eat and eating from different cultures. So I am a defense kid and I have grown up at various parts of India. So I have seen various cuisines in India itself, which intrigued me a lot, that how the cuisines are so similar but so different where we are. So suppose हम लोग साउथ, मैं साउथ में काफ़ी रह चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 8 years आई हैव लिव्ड इन साउथ. सो वहाँ पे हम इडली डोसा खाते हैं, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एक्चुअली. तो इडली से इडली और सांभर खाते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हम रोटी और दाल खाते हैं. कॉन्सेप्ट इज वेरी सेम कि ग्रेन एंड pulses, it is that's what you're consuming, but it is in different formats, like different kind of grain and different kind of pulses. So from there my interest enhanced कि food को लेके और क्या क्या कर सकते हैं. then biology मेरी काफ़ी favorite subject थी. सो मेरे लिए वो कभी बायोलॉजी मुझे ऐसे लगता ही नहीं था. मतलब बचपन में माय फेवरेट बुक यूज्ड टू बी एनसाइक्लोपीडिया. आई सिट विद द एनसाइक्लोपीडिया एंड रीड इट ओवर एंड ओवर अगेन एंड लुक एट ऑल द डायनासोर्स एंड एवरीथिंग. सो it never seemed like a subject which I need to study separately. So to answer your question, it would be a little difficult to understand for people who come from a computer science background to directly to food, who have no interest in the background of biology, because food में जब भी तुम आओगे तभी you need to understand that you need to like you need to have clarity of all the aspects of it. ठीक है.
कि वो तुम्हारे बॉडी में जाके कैसे इफेक्ट हो रहा है, वो ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, बिकॉज फूड टेक के जो पार्ट्स है, फूड केमिस्ट्री है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, then food science and engineering, food safety and security. So all of these are a amalgamation of all the subjects. It does not have just one subject. There is mathematics, there is physics, there is chemistry, a lot of chemistry, and there is a lot of biology. So if someone, supposedly, because I've seen a lot of students who don't like to study biology, ठीक है, तो उनको अगर आप फूड में आने बोलोगे, उनको बहुत सारा माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें उनको टर्म्स याद रखनी पड़ेगी कि आई नो इट साउंड्स अ लिटिल दिस थिंग, मतलब बट दे हैव टू रिमेम्बर कि दही में एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया जाता है, और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दही और योगर्ट का डिफरेंस क्या है. सो दैट कम्स फ्रॉम कि बैक्टीरिया कौन सा जाता है उसमें. सो दे हैव टू लर्न ऑल ऑफ इट, एंड दे हैव टू थोड़ा सा तो रट्टा भी मारना पड़ता है माइक्रोबायोलॉजी में. तो Got it. अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है बायोलॉजी में, तो वो शायद आगे तक जा नहीं पाएगा. उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि उसको ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे बॉडी में जाके इफेक्ट कैसे करेगा. जैसे आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. आपने गट हेल्थ लेके अभी बहुत सारी चीजें हो रही है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक. डू यू नो द डिफरेंस ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, टू बी ऑनेस्ट? Like for a very normal person, is it possible that you'll understand? It is being talked about a lot, but to understand the difference between a prebiotic and probiotic, and what is it doing to your gut, and why is it so important, would they understand all of this? No, right? So what a prebiotic is, a prebiotic is basically foods that help your gut. There is a lot of microorganism load in your gut. So there are a lot of bacteria which help your food get digested, right? तो गट की जो माइक्रोबायोटा बोलते हैं इसको, तो वो जो है उसको और फ्लरिश करने के लिए, कि उनको भी कुछ टाइप के खाने पसंद है, जैसे हमें छोले भटूरे खाने पसंद है, उनको भी कुछ कुछ टाइप के खाने पसंद होंगे probably. So for that, there are specific types of food which are rich in fiber, which are rich in a few vitamins, so that we need to feed them. So now probiotic is some food like yogurt or kimchi or sauerkraut, which already, because that is a fermented food, they already have those good bacteria. It is called good bacteria because they are doing good to your body. So why is this so important? Because your gut health is directly proportional to your brain health. सो अभी इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है. अगेन आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर, कि ये सारी रिसर्चेस जितनी इंडिया में नहीं हो रही है, बाहर यूएस में इट्स वन ऑफ द मोस्ट लाइक हाईएस्ट रिसर्च थिंग्स, की गट ब्रेन जो रिलेशनशिप है ये क्यों है. इसीलिए वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स इतना गट बैक्टीरिया लेके, चोबानी जो योगर्ट की कंपनी है वो इतना स्पाइक क्यों हो गया उसका सेल्स एंड एवरीथिंग. सो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग एवरीवन की जो भी चीज कर रहे हो उसे माइंडफुली करो. कि अगर पूरा रिसर्च ही करना है तो सारी पूरी दुनिया की जो चीजें हैं वो पहले जानना जरूरी है. हमारा हेरिटेज और कल्चर कहाँ से आता है वो सब जानना जरूरी है. और फूड साइंस में ये सारी चीजें एक जगह पे आ जाती है. So chemistry, physics, food engineering में there is a lot of physics, because you need to understand how the machineries are made and what that machinery is doing and which principle those machinery are acting upon, like Bernoulli's principle and various other laws of physics are there. So we need to have a background of all of those things. Like people think कि food technology में आपके is to such an easy subject, you just need to study biology और खाना वाना पकाना होता है, हो जाता है. But I don't think we can have a good future for us if we just think about that. सो यहाँ पर ना मानसी ने एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड किया, और मतलब थोड़े से मिथ्स को भी उन्होंने रेस किया, बताया. और जो भी हमारे व्यूअर्स जो लेट्स से अभी 12th में हो, या फिर वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार बायोटेक लें, माइक्रोबायो लें या फूड टेक लें, तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम ये डिग्री परस्यू करने का सोच रहे हैं. क्योंकि किसी भी हम अपने करियर के 4 साल देंगे उसमें, और आगे मास्टर्स भी करेंगे अगर, तो 6 से 7 साल देंगे, फिर वो आगे हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, हमारी करियर ट्रेजेक्ट्री डिसाइड होने वाली है. तो पहले क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना फ्रॉम एन एक्सपर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो थैंक्स मानसी फॉर शेयरिंग दिस डिटेल्ड आंसर. सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर अनदर एस्पेक्ट, कि मानसी, इंडिया में अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कौन से लाइक टॉप कॉलेजेस हैं
जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफर करते हैं, जो स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, या फिर मतलब उसे नीट में जाना ही नहीं है, उसने ट्वेल्थ कर ली पीसीबी से, और उसे अब वो एक कोर्स देख रहा है, तो क्या क्या उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे वो अच्छा करियर बना सकता है इस डोमेन में? Okay, so coming back to that, I think there are a few colleges which offer you food technology. There might be more at the moment, but when I was there, I come from West Bengal, so we had Jadavpur University, we had GNIT, and we had Haldia Technological University there. And there are various like regional colleges like this which offer food technology as a course. Especially south mein, Maharashtra mein, there are a lot of colleges like LIT and some agricultural colleges also. Of course, CFTRI is that one of the biggest food technology colleges is CFTRI. ओके। Because food research is very rich in CFTRI. And another college which was previously known as IIFPT, which is now again another NIFTIM of the South. So these are a few colleges which are the best in food technology. Right. So I did my bachelor's from GNIT. One more perspective I want to give you, which is ki it does not matter which college you come from. To be honest, I think that's what we started talking about when you approached me for this, because of course there is IITs also. IIT Kharagpur offers a very good course in food technology and agriculture. So if you do not get there, do not have your hopes down कि वहीं पे सब कुछ हो रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, because I have a few friends who have done their bachelor's from there and who have shifted completely to computer science and they're working in Capgemini now. So what your life is holding for you, whatever you want to pursue, is those are very different things. So you need to have clarity कि where do you want to go. कि उनको जैसे कंप्यूटर साइंस जाना था, उनकी रैंक इतनी बनी नहीं तो उन्होंने फूड टेक ले लिया और वो फिर बाद में जाके मास्टर्स कर लिए कंप्यूटर साइंस में एंड दे वेंट टू देयर ओन पाथ्स. सो इफ यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट फूड टेक, यू विल नीड टू फाइंड आउट योर वेज कि उसके बाद क्या करना है तुम्हें. तुमको मैनेजमेंट लाइन में जाना है या फिर रिसर्च लाइन में जाना है या फिर पॉलिसी मेकिंग लाइन में जाना है. सो देर आर huge pathways that are there, but you need to have an open mind for that. One. And you need to also not try to make yourself this thing कि अगर मैंने एक specific college से एक specific degree नहीं की, so I cannot reach somewhere. So I think that is also it. ओके। सो मानसी, अब ना मेरा नेक्स्ट एस्पेक्ट ये रहने वाला है कि यार हम क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया कि यार ठीक है, अगर आपका टॉप कॉलेजेस में, नेशनल यूनिवर्सिटीज में नहीं हुआ है, सो डोंट बी डोंट लूज होप। ठीक है, लाइफ अभी बहुत बड़ी है, हम आगे भी अपना राइट करियर डायरेक्शन पिक कर सकते हैं। और यही हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव भी है कि यार हम उन लोगों की स्टोरीज कवर करते हैं कि जो ठीक है, जो सेल्फ मेड हसलर्स हैं, ठीक है, जो कभी आईआईटी एनआईटी का टैग नहीं ले पाए ड्यू टू एनी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट अभी वो लाइफ में दे आर एक्सेलिंग एट अ वेरी डिसेंट पेस। तो यहाँ पर ना मेरे को जानना था कि फूड टेक इंडस्ट्री में क्या अभी करियर रोड मैप के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर कोई कोई बंदा बहुत पैशनेट है, क्योंकि आप बार बार ये टर्म यूज कर रहे हो कि यार आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, आप बहुत ज्यादा पैशनेट होने चाहिए, और आपको सारे बॉक्सेस को टिक मार्क करना चाहिए कि हाँ, इस फूड इंडस्ट्री में ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, ये एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं। तो लेट्स से आई हैव मेड अप माय माइंड कि हाँ, मेरे को इस इंडस्ट्री में रहना है। तो अब एज अ डाउन द लेन 10 साल बाद अगर मैं इस डोमेन को देखूं, तो मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए जिनका मेरे को बहुत ध्यान रखना है, प्लस करियर रोड मैप अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो कैसा रहता है? All right. So probably I should start with my own example, कि how my career shaped into wherever I am today. Okay. So I started my BTech, and honestly speaking, I used to look up to all the people in computer science and electrical engineer कि ये लोग शायद बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं. But thankfully speaking, shout out to GNIT, they had a really good course structure for food technology. And I had amazing professors which gave me like amazing depth of knowledge about the whole industry, about food chemistry, about like every aspect of whatever I was studying at that moment. Food microbiology se leke everything I learned very in-depth knowledge there. So after that, whatever we knew about the biggest companies of the world.
We knew about HUL, we knew about Britannia, about Coca-Cola, and the biggest companies of in the food FMCG sector. So I also was thinking in that way कि I will work for a big MNC. I will just go into an MNC as a probably a managerial role और मेरा major goal था research and development में जाने का. So that was my goal, एकदम set goal ऐसे, and I was looking forward, which is why I also pursued my masters. So what happened during my BTech was कि we were a few set of people who thought that we will sit for GATE exams and we will do our higher degree, we will do our masters, and then we'll go into a higher place. So from our college, we were said कि if you have decided that, then there is no point of you sitting for the this thing, yeah, the placements, right? So at that time, I think around third year of college, I started using LinkedIn and I started like conversing with people from different industries and everything. So I had a like good chance of going into an industries, and I saw कि management training बन के जा रहे हैं लोग Coca-Cola में and everywhere. So थोड़ा सा वो डिमोटिवेशन हो गया था कि व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ, इज इट अ गुड थिंग दैट आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स और नॉट, बट आई वाज लाइक ठीक है उसके बाद कोई जॉब मिल जाएगी, सो इट्स फाइन. एंड व्हाई गेट? बिकॉज गेट में यू गेट अ स्कॉलरशिप. आफ्टर यू डू योर गेट यू गेट अ स्कॉलरशिप एंड थ्रू दैट यू कैन एक्चुअली गो, मतलब आपका मास्टर्स ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है. So you just give your 2 years of time and you like are almost learning for free and getting a degree. So that's why GATE exam was important. So then I sat for GATE and then I got into NIFTIM. Then after NIFTIM, I got a worldview about what all are the different aspects of this food processing sector, right? So there is not just companies like MNCs like Coca-Cola or Britannia. There are other things, other places that I can work for as well. So there is policy building. There is obviously entrepreneurship. हमारे college के नाम में ही entrepreneurship and management आता है. Then there is management specialities. Then again going into rural development and agribusiness sector. So like combining all of these things, I got a very amazing worldview from NIFTIP. One. Then in during my BTech, I did 3 internships. I did 2 internships. One was in ITC, that was in operations and plant management. So I got an idea कि एक प्लांट में कैसे होता है चीज़ें, फिर चिपिंग में मतलब बिस्किट चिपिंग में कैसे उसको ठीक करते हैं, तो मशीनरीज का मुझे आइडिया मिला, वर्कर्स के साथ कैसे काम करते हैं, ऑपरेशंस, ये सब का आइडिया मिला. So that was working for an MNC again. In my next internship, that was, I think, a life changing point for me. I worked for the National Dairy Development Board. So that time I was deployed in a very rural village, Sundarban के इलाके में काफी rural village में मुझे काम मिला था. And that work gave me a whole picture of the grassroots level of food processing, where it starts from. हम लोग जो फार्मर्स की बातें करते हैं ना कि फार्मर्स की लॉज एंड एवरीथिंग एंड वेयर आवर फूड कम्स फ्रॉम, यू नीड टू नो द सोर्स ऑफ योर फूड एंड एवरीथिंग. आई एक्चुअली सॉ इट बेयर हैंड कि हमारा सोर्स ऑफ फूड क्या होता है. कि एक बड़े प्लांट में, एक बहुत बड़े डेयरी प्लांट में, आई वॉज वर्किंग इन द डेयरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. So I went into all the collection units of it. I was working in a chilling plant. From there, I had to go into the villages and I got a sight of कि कहाँ से collection unit होते हैं, छोटे छोटे cans में कैसे हर जगह से collect होके आते हैं, and then they get processed in that chilling unit. फिर वहाँ से जाके फिर बड़े एक plant में जाके फिर उसको कैसे process किया जाता है. But apart from that, I also got into working with rural women or rural entrepreneurs, training them for very pilot testing and making them aware of what are the different schemes that they can look into, they can look forward to, what are the different entrepreneurship, like what are the different things that they can take up for their household and everything. So apart from just working at their household, they can also own a business and they can form a group. So that was the first time I got a knowledge about SHG, self-help groups. कि एक साथ women आके they can create a SHG, and again FPOs, farmer producer organizations. So इन सब का मुझे कोई idea ही नहीं था जब तक I started working for these people. So I got a view कि ठीक है, this is what rural development looks like or entrepreneurship development looks like. So what we see is
आजकल हमने काफी लोगों को, everyone is trying to become an entrepreneur now. Everyone is trying to have their own startup, own company. We are all there in the same race, right? But we never think ki what about these people who are creating our food? What about these farmers? And when you get to them, you can see their passion, because it is almost like survival for them, right? सो उनके लिए ये नहीं है कि वो कोई शौक के लिए इसको कर रहे हैं, उनके लिए सर्वाइवल के लिए. सो आई सॉ दैट दैट पैशन इन देम कि कितना वो लोग दिल से चाहते हैं कि कोई कंपनी वो क्रिएट करे और उनका कोई दिनचर्या अच्छे से हो और उनकी प्रोडक्ट्स बने, छोटी छोटी जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो मार्केट में आए और वो आगे बढ़ सके. सो फॉर दैट रीजन आई गॉट एन आइडिया ऑफ दैट, एंड उसमें मुझे केवीके के साथ काम करने को मिला था, कृषि विज्ञान केंद्र. तो कृषि विज्ञान केंद्र से एक चीज अच्छा हुआ, आई गॉट टू लर्न अबाउट मशरूम प्रोड्यूसिंग, अबाउट हनी प्रोसेसिंग, अबाउट बायोफ्यूल मेकिंग, अबाउट लाइक a lot of tissue culture, and then rural banking. I learned like a lot of things from there. So primarily what started off seeming as a very bad thing कि मुझे एक बहुत ही मतलब for the travel time to there from my place was almost 2 hours each side. So every day I used to travel for 4 hours for my internship. So I used to think it is a very bad thing that's happening to me. But after like all these years, I think that was my richest like experience that I had in my life, and that helped me also end up the job where I am today. Because when I was asked in the interview and everything, this helped me कि I had a background knowledge of rural development. So coming back to your skills and whatever you require to stay in this kind of industry in the food sector, right? So you would think that I would answer like कि आपको फूड केमिस्ट्री जानना होगा, फूड माइक्रोबायोलॉजी जानना होगा, या फिर आपको सारी कंपनीज के नाम पता होनी चाहिए, या फिर वो क्या करते हैं, या फिर उनके R&D में. So the second example is I worked in the LSTC, Life Sciences and Technology Center at ITC, which is like the major center for research and development for ITC, right? So I thought कि मेरा future तो set है, मैं R&D में ही जाने वाली हूँ. So I will work for R&D, and I had a strong base for R&D as well. I did my masters, and after that I did there, so R&D was set for me. And that's what people think कि हाँ ठीक है, R&D is the only way, research ही कर सकते हैं and everything. But then COVID happened, and our placements did not happen. So then this ministry's scheme happened, and I got placed here. And whatever happened, I think we spoke about that earlier. So skills ke part mein again, if I come back, I think whichever sector you are, it is beneficial to say कि कोई भी sector में आप हो, तो आपको इतनी awareness होनी चाहिए कि दुनिया कैसे चल रही है. We have to keep in line with whatever is happening around the planet, and what are the requirements of the whole world at the moment. So at the moment, the biggest thing that is talked about is AI, right? Artificial intelligence. So if you talk about skilling, we need to skill ourselves. Like I'll give you an example of what I work right now. I work in the data analysis part of my job. So how I came in here is from inception of the job, from inception of the scheme, then making the guidelines, which is policy making and analysis, to monitoring and evaluation. So there was a point where I was looking at all the key indicators and monitoring and evaluation of the scheme. Then I worked for finance for 2 years in the finance section, how to like take care of the subsidy, how to release the subsidy, and how to release the amount of funds to all the states and everything. And now I'm finally working at the data analysis part of the whole scheme. So skills, if you want to ask, we need to have multidisciplinary skills in the job that we are doing. So data analysis is again something which you require in every kind of business. Whatever business that you go, there will be data, because now the world is working on data everywhere, right? So you need to understand कि इस data से ये changes हो रहे हैं, यहाँ पे this is not getting implemented, and there are a lot of key indicators which will make you understand that how the scheme is running or how any business is running for that matter, right? So abhi, I would suggest if someone is in our line of business, I would suggest them to understand the skills which are related to all the things, from food technology to sustainable development goals to data analysis
to also AI, that how AI and blockchain, all of these are having a huge part in food technology, because blockchain can be used in food safety, कि कहाँ कहाँ लाइन में आपका फूड आ कहाँ से रहा है, वो सब जानने में ब्लॉकचेन कैन हेल्प। एआई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से उसे लेके आ रहे हो, फिर उसमें क्या क्या चीजें आप डिफरेंसेस कर सकते हो, पैकेजिंग में चेंजेस क्या क्या हो सकती है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पैकेजिंग। सो वी नीड टू हैव अ मल्टीडिसिप्लिनरी skill set if you want to move ahead in life, honestly. ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी ना यार आपकी, मतलब जैसे आपने बोला कि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, बट द वे यू लिंक्ड दिस आंसर विद योर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर इंटर्नशिप्स, कहाँ से वो आपने वो रूरल एरिया में इंटर्नशिप की हो, कहाँ से फिर वो उस टाइम पर आपको लग रहा था कि यार ये अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन आज की डेट में अगर आप 5 साल बाद डाउन द लाइन उससे कंपेयर करेंगे तो कैसे उस डिसीजन ने आपके आज की करियर ट्रेजेक्टरी को चेंज किया। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मतलब मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मानसी जर्नी से मैं भी अभी समझ पा रहा हूँ कि यार हमेशा नहीं है कि हम हर कोई बंदा कंफ्यूजन में रहेगा, डिलेमा में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार हमें ऑन द स्पॉट क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी थोड़ी बहुत डिलेमा में, अनसर्टेनिटी में रहना इज पार्ट ऑफ लाइफ। हम कुछ टाइम बाद उस चीज को 1-2 साल बाद लगा के थोड़ा सा टाइम देके थोड़ा सा सिंक इन होने के बाद भी चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। तो हमेशा हमें किसी एक्सट्रीमिटी में जाने की जरूरत नहीं होती कि यार अब ये नहीं हुआ तो डेट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी हमारी लाइफ में, तो बस वी हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल, जैसे मानसी ने बताया कि यार हमें मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज भी होनी जरूरी है, और बहुत ज्यादा खुद को अपडेटेड रखने की जरूरत है, और खुद को बहुत ज्यादा अडेप्टेबल बनाने की जरूरत है कि जो कि नीड ऑफ द आवर है, हमें उसके हिसाब से अपनी नॉलेज को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की जरूरत है। So, Mansi, moving on to our last aspect of this podcast, then we would be wrapping it up. So, I just wanted to understand कि यार अभी uh, अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि अगर हम बाहर यूएस, यूरोप और इंडिया को कंपेयर करने लगेंगे तो बहुत पॉडकास्ट स्ट्रेच हो जाएगा। बाकी जैसे आपने यूएस और यूरोप का बताया था कि यूएस में फॉर क्या क्या उसका रोल रहता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसे कट शॉर्ट ही करेंगे। तो मेरे को बस ये समझना था कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि मार्केट में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है एट अ एंट्री लेवल पोजीशन। लेट से मैंने ग्रेजुएशन कर ली, तो क्या क्या किस किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, या फिर इवन पीएचडी के बाद मैं क्या क्या जॉब कर सकता हूँ, और मॉनेटरी वाइज ग्रोथ कैसी है ओवरऑल इस फील्ड में हम एट अ बिगनर लेवल। क्योंकि यार देखो, अगर कोई जिसे 20 साल का एक्सपीरियंस है नेस्ले में या कोको कोला में, अगर हम उससे बोलेंगे कि उसकी मॉनेटरी ग्रोथ कैसी है, तो दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस टू आवर व्यूअर्स। व्यूअर्स को इंटरेस्ट है कि यार बिगनिंग एंट्री लेवल पर कैसी ग्रोथ है और 2-3 साल बाद कैसी ट्रेजेक्टरी रहती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। Right. So, thank you for that question. Because something was coming up in my mind. I have seen something in LinkedIn. If all the people who are interested in food technology, they can also go to LinkedIn and they can search for it. कि फूड टेक के जो कंपनीज है एफएमसीजी के, उनके जो बिगेस्ट कंपनीज है एमएनसीज, ठीक है, उनके जो एंट्री लेवल जॉब्स है, लाइक आप प्लांट एंड ऑपरेशंस में चले जाइए, आप क्वालिटी टेस्टिंग में चले जाइए, ठीक है, इन सब में जो रोल्स है उनमें कौन एक्चुअली काम कर रहा है, यू गो टू द पीपल इन योर सर्चेस एंड देन यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट. So what I have found is, even at my time when I was graduating, what I found is कि especially food quality and testing में, quality testing आप graduation के बाद बिल्कुल जा सकते हो कोई भी plant में, तो वहाँ पे major people who are there, they are chemical technologists, chemical engineering के बंदे होते हैं वहाँ पे. Then if I go to plant and operations, वहाँ पे we get mechanical engineer, we get electrical engineer, we probably can get civil engineers also somewhere. So because इतने लोगों ने इतने अलग अलग एस्पेक्ट से वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, because we don't upgrade ourselves so much to apply there, and we पहले ही हम अपने आप को बिलिटल कर लेते हैं कि हम शायद नहीं कर सकते वहाँ पे. So it is populated by other people from other sectors, ठीक है, जो सिर्फ एक चीज जानता है, जो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आया है, तो वो उसमें केमिकल्स क्या डालेंगे वो जानता है, ठीक है, पर उसको ये नहीं पता कि उसका इफेक्ट फूड पे क्या है, राइट. सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ पीपल to apply at those places which are taken up by other kinds of people.
राइट, बिकॉज यू नो द होल पर्सपेक्टिव कि इसका फाइनल प्रोडक्ट पे जाके क्या इफेक्ट होने वाला है. सो दैट यू हैव टू प्लेस योर सेल्फ इन द इंडस्ट्री लाइक दैट. देन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फर्दरिंग योर करियर, सो जैसे मेरे ही कॉलेज से मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स गए थे कोका कोला में. So you are like you get hired as a management trainee there, and there the growth is multiplied because you get into the management sector. You can become a line manager. You can then become a product manager. You can then मतलब operations के manager बन सकते हो एक एक करके आपके experience के ऊपर depend करता है वो. उसके बाद आप एक MBA का course भी कर सकते हो if you require it for furthering your career. So all of those things you can do. Apart from that, if you want to do research, like proper solid research, if you want to do, there are PhD. Like you can do. I have known a lot of people who have started doing their PhD from India, and then they have because काफी चीजें होती है. जैसे आप सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हो, आप जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हो, काफी एग्जाम्स होती है. एग्रीकल्चरल एग्जाम्स भी होती है, फूड के दूसरे एग्जाम्स होते हैं जिसमें अप्लाई करके आप उस रिसर्च लाइन में जा सकते हो. तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली exactly करना क्या है. एंड आई वुड एक्चुअली सजेस्ट पीपल टू सर्च दिस आउट कि जो ये सारी जगह मैंने बताई है ना, प्लांट एंड ऑपरेशंस, देन फूड क्वालिटी एंड टेस्टिंग, इन सब में एक्चुअली काम कौन कर रहा है. क्योंकि मैंने अपने ही लाइन में देखा है पॉलिसी मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी मेकिंग इन फूड साइंस, विच इज प्रोबेबली समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू doing in my, and I'm already working in that sector. But policy making, which we can see, policy comes from law. So all the people who have done law, they are working for the policy making. So they can work for a policy as a policy perspective, but they won't ever understand कि उसका grassroots level पे क्या effect हो रहा है और उसका food से क्या relation है. They won't know. So there is a very huge gap in all of these things. So if we understand that gap, if we find out that gap, we can apply to all of these companies that I'm talking about. ओके. एंड मानसी, मॉनेटरी वाइज ग्रोथ अगर आप थोड़ा सा नटशेल में बताएं कि ओवरऑल कैसी मॉनेटरी वाइज ग्रोथ है इस डोमेन में. ओके, सो मॉनेटरी वाइज ग्रोथ, अगर आप अपने आप को एक सेम लेवल पे, जैसे इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद द कंप्यूटर साइंस पीपल, ठीक है, हु आर अगेन कंप्यूटर साइंस के भी दो पहलू है, आई वुड से, कि पीपल हु आर इनटू कोडिंग एंड देन पीपल हु आर इनटू एनालिटिक्स, राइट. So there's a huge difference in them as well, because analytics में again it has saturated so much because all of the people are coming into analytics. So जो कोडिंग करते हैं, आप अगर उनसे अपने आप को कंपेयर करोगे कि वो कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोडर्स अभी के जमाने में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. सो बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई है, उनका वैल्यू भी उतना ही हाई है. इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद देम, then there is no way that you can monetarily increase yourself like that. But if you find your ways out, जैसे कि सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैनेजमेंट ट्रेनी बने, फिर 2 साल बाद आपने कुछ फंड्स ऐसे बनाए, तो स्टार्टिंग लेवल आपका कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है. आपका 12,000 से लेके आपका 30,000 तक स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है. बट इट इज अगेन वेरी डिफरेंट. लाइक आई हैड अ वेरी सेट सैलरी इन माई माइंड कि हाँ मुझे इतना ही सैलरी से स्टार्ट करना है. सो विच इज वाई आई ऑप्टेड फॉर मास्टर्स. But I have seen a lot of people who have done masters from my college and other colleges, who even after doing masters, they have not landed up in the same salary bracket. So it is absolutely, there is no set salary for people that you can achieve. ठीक है, और growth भी वैसा depends on your sector. If you're working for a startup, the growth will be according to that. कि अगर स्टार्टअप का ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी चेंजेस होंगी. इफ यू वर्किंग फॉर अ प्लेस लाइक अ मिनिस्ट्री, देन उसकी सैलरी सेट होते हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके हिसाब से आप हो रहे हो. अगर आप एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, एंड इफ यू आर एबल टू ग्रो योर सेल्फ लाइक दैट कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से घुसे, और अगर आप क्वालिटी और एश्योरेंस में आए, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गए, तो योर सैलरी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग लाइक दैट. सो अगेन इट कम्स टू यू कि आप अपने आप को कैसे प्लेस करते हो सारी जगहों पे. Got it, got it. So thank you for this detailed response, Mansi. So I believe that was it from my side. So I'll just take a minute to reiterate whatever I have learned from Mansi's journey and Mansi's insights. तो जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना मेरे को मानसी के जितने भी उन्होंने आंसर शेयर किए अपनी जर्नी से, वो ये थी कि यार
उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को बताने की कोशिश की, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया अपनी खुद की लर्निंग से, क्योंकि लोग क्या है कि सुपरफिशियल लेवल पर लर्न कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मानसी के पॉडकास्ट से निकल के आ रही है वो ये है कि यार हम अपनी जर्नी से ना, जो हमने ग्राउंड में काम किया, जब हमने अपनी बैचलर्स की, मास्टर्स की, इंटर्नशिप की, तो जो वो हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे वो हमारे आगे की जर्नी को कैसे डिसाइड करते हैं, वो मेरे को काफ़ी अच्छे उनके इनसाइट से लगा। प्लस हर चीज हमने ये भी समझा कि यार जो बंदा फूड टेक में खुद को स्टेब्लिश करना चाहता है कि उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स उसे दिमाग में रखने चाहिए, क्या क्या कैसा स्कोप रहता है, कैसी मॉनेटरी वाइज ग्रोथ है, प्लस कैसे कॉलेजेस हैं, अगर आप टीयर 1 कॉलेजेस में, टीयर 2 कॉलेजेस में नहीं पहुंच पाते हो तो क्या क्या बैकअप ऑप्शन रहता है, एग्जैक्ट करियर रोड मैप कैसा रहता है। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन मानसी, एंड इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू, एंड आई बिलीव हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपकी जर्नी से। सो थैंक यू सो मच ऑन फॉर एक्सेप्टिंग माई इनवाइट फॉर दिस पॉडकास्ट। Thank you so much, Lavan, for having me. I think I started off with telling you ki, why should we have this, but I think after the whole thing, I can understand that people who are trying to come into this sector, they can have more knowledge about it. So thank डेफिनेटली you for डेफिनेटली। having me, and I hope you do really well, like in the coming years and coming podcasts, because you're थैंक यू doing सो a मच। really good thing. Because people have this insecurity in them कि अगर मैं इस कॉलेज में नहीं जा पाया या फिर इस जगह पे नहीं पहुंच पाया तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, या फिर I don't have any other aspect going on in my life, I'm a loser or something like that. But thanks for your Beyond the Ranks podcast. I think people can understand that that's not the end of the world. ट्रू So yeah, ट्रू, thank you थैंक for यू फॉर having द this काइंड podcast वर्ड्स। as well. Yeah, thank you so much for your warm wishes. Thank So you. that was it from my side. So हमारे viewers के लिए मैं जाने से पहले बस ये एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि यार ऑलमोस्ट हम 30 पॉडकास्ट अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं हमारी 6 महीने की जर्नी में। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि यार आप बियॉन्ड द रैंक को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है, मुझे और सचिन को। प्लस हमें ये भी रहता है कि यार हमारे जो चैनल का जो विजन है वो यही है कि हम कॉर्पोरेट में जो भी टाइप की जॉब्स हैं, अगर लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री है तो उसमें फूड टेक से लेकर बायोटेक से लेकर माइक्रोबायो हर एस्पेक्ट हम कवर करना चाहते हैं, फार्मा, बायोमेडिकल, हर चीज। आईटी सेक्टर है तो उसमें एनालिटिक्स की रोल, फिर उसमें प्रॉपर कोडिंग की रोल, हर अभी हम फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग के साथ भी हम पॉडकास्ट कवर करने वाले हैं, और फ्यूचर में बहुत सारी चीजें लाइंड अप भी हैं। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग अस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।